अतिदूरभवने विभाति कुलकन्यका विमलमानस वृक्षमूल भरितं च मार्गणचयं विलोक्य विफलाशया तां विलोक्य गलिताग्रहामथ जितेन्द्रियं च गुणिनं भजे पन्दलाधिपकुमार भो वरद सुप्रभातमिह जायताम्। ज्योतिरत्र शबरीगिरौ मकर संक्रमे तदनुलोकयन् मानवार्थ परिपूर्ण तृप्ति मनुभूय पूरित मनोरथः मुक्तिदं हरिहरात्मजं पतितरक्षकं युगपतिं भजे पन्दलाधिपकुमार भो वरद सुप्रभातमिह जायताम्। अष्टादशारचित सोपान पंक्तिमवतीर्यात्मसंस्कृतिपरः प्रत्यक्षमूर्तिमति भक्त्या स्मरन् तदनुपम्बादडं प्रतिसरन् संस्तौमि पुण्यशबरीशैलवासिनमभौमप्रभं युगपतिं व्याघ्रीचरेश भवतात् सुप्रभातमिह वम्बादडाद्र्यधिपते कान्दारमार्गमधिलङ्घ्याद्रिसानुतडमागत्य तत्र कुतुकी भुक्त्वा यथेष्टमथ पम्बातडे तदनु कृत्वा चिरं श्रमशमम् संस्तौम्यहं कलियुगेशं तदा सकलसौख्यप्रदायिनममुं व्याघ्रीचरेश भवतात् सुप्रभातमिह पम्बातडाद्र्यधिपते पम्बातडात् प्रतिगत प्राप्य गेहमतिशुद्ध्या गृहे युगपतेः पूजां विधाय विभुमाराध्य केरफल संस्फोटनादिकृतवान् माल्यावमोचन विधायीगलात्मृत समाप्तौ स्तवीमि वरदम् व्याघ्रीचरेश भवदात् सुप्रभातमिह पम्बातडाद्र्यधिपते कान्दारजात इति पाण्यो प्रजात इति घोराद्रिवास इति भोः ज्योतिस्वरूप इति कर्पूरभूतिरिति पम्बातडेश इति भोः सत्यस्वरूप इति योगीन्द्र इत्यपि विभुं कीर्तयन्ति विबुधा व्याघ्रीचरेश भवतात् सुप्रभातमिह पम्बातडाद्र्यधिपते